I'm just giving you next two more minutes. Okay, अगर किसी को कुछ पूछना है पिछले सेशन का, if somebody had revised, somebody is having some confusion, doubts, और कुछ और भी discussion अगर है, so you can just ask me at the beginning, because today I will be taking that 4 analytics, then we will move into the practical side of the Excel as well. Okay, so I hope you are aware about it that today we are having 2 hour session. हेलो। Yeah, गुड इवनिंग मैम। good evening. मैम मुझे डाउट था रिग्रेशन एनालिसिस एंड को लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन बेसिकली। Okay, so that doubt I will be definitely clear when I am actually moving into the detailed topic about that. Okay, देखो अभी हमने वो टॉपिक सिर्फ बात करी है कि these are all the things. Okay, Rahul, we are not यस yet मैम। touched that topic in the detail. अभी हमने उस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करी है डिटेल में, हमने सिर्फ ये बात करी कि हाँ ऐसे एनालिसिस होते हैं. सो अभी आप उस चीज पे फोकस मत करिए कि होते कैसे हैं वो चीजें. दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, मे बी टुडे, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास. बट व्हाट इज एग्जैक्टली रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस? ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड्स होती है जो नॉर्मली हमारे डेटा पे हम अप्लाई करते हैं व्हाइल डूइंग द डेटा एनालिटिक्स. अब ये क्यों यूज होता है? क्योंकि जब हमारे सामने दो चीजें हैं, ओके, सो वन थिंग इज डिपेंडेंट ऑन अनदर. एक सिंपल लॉजिक है. If you study hard, you will get a good marks. So study hard. So study hard is not any particularly कोई quantitative है ना, ये वैल्यू नहीं है. मतलब हो सकता है आप 1 घंटा पढ़ोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और मे बी नैतिक विल स्टडी 2 hours, he will get more marks. So that is very abstract one. But if you spend, अगर आपने ऐसा इसको रिलेट किया कि if you reduce your screen time, okay, say by 1% or by say 10% or by, might be the like 50% of your screen time, so definitely you will get a good marks. So marks, getting good marks and reducing the screen time is completely correlated. Are you understanding, Rahul? यस मैम। और फिर वहां पे हमको वैल्यू मिलती है. मान लो जैसे आपका क्लास है, सो सपोज आई एम टेकिंग यू एज यूर क्लास एज अ सैंपल. तो अगर एक रफली हमने कैलकुलेट किया, देयर आर 8 पार्टिसिपेंट्स और देयर आर 8 स्टूडेंट इन वन सैंपल, और सभी के पास स्मार्टफोन है, एंड देन दे रिड्यूस देयर स्क्रीन टाइम बाय 50%. अब जरूरी नहीं है हर एक का अलग अलग स्क्रीन टाइम होता है, बट एक रफली अगर इफ वी जस्ट रिड्यूस इट बाय 50%, तो कोई 1 घंटा देख रहा है, कोई 2 घंटा देख रहा है, कोई 4 घंटा देख रहा है. अब उनके इस कैलकुलेशन से हमको उनका टोटल स्क्रीन टाइम मिलेगा आउट ऑफ 24 आवर्स. मतलब दिन के 24 घंटे में से वो कितना स्क्रीन टाइम है उनका, एंड देन रिस्पेक्टिवली देयर मार्क्स दे अचीव्ड इन द रिसेंट टेस्ट. ओके, सो वो हम कोरिलेट कर सकते हैं. आर यू क्लियर विद दैट, राहुल? यस मैम। Okay, and then regression is the just मतलब correlation is a correlation between two parameters, and regression मतलब वो किस तरीके से डिफर करता है. मतलब अगर आपने स्क्रीन टाइम कम नहीं किया और कम किया भी और आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ओके, लेट्स एग्जांपल. ओके, सो उस केस में क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे हम दूसरे पैरामीटर्स को एनालिसिस करना चालू करेंगे. Maybe he's not attending the session, maybe he's not submitting the assignment on the time, whatever be the parameters. Okay, so वो parameters हम analysis करने के जो next step रहेगा, that is going with the regression analysis. Okay, is it clear, everyone? यस। Just give me 1 minute, it is little urgent call, I had to pick it. 1 minute, huh? Yeah, so I hope, Rahul, your doubt is cleared. Right now I am quickly sharing my screen. I hope my screen is visible.
Yes, ma'am. Fine. So I think in the last class we just spoke about the relation with the data analytics. हमने ये डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, ओके, और वो फील्ड में जो भी मेथड्स है वो सबसे ज्यादा हम डेटा एनालिटिक्स में यूज करते हैं. और लाइक देयर इज वन कंपनी लाइक विच इज अ ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी, एंड उसने एक एनालिसिस में ये प्रूव किया हुआ है कि लाइक इफ द कंपनी इज यूजिंग डेटा एनालिटिक्स, ओके, मतलब एग्जिस्टिंग डेटा को वो जब कुछ उसके ऊपर एनालिटिक्स अप्लाई करते हैं तो उनको 23 टाइम्स मोर उनका आउट परफॉर्मिंग रहा है. मतलब दे रिटेन देयर कस्टमर्स, दे कॉम्पीट देयर कॉम्पिटिटर्स, they prove they are more return on investment or more revenue or profit, like that. Okay, so it is a generic 23 times. Okay, are you clear with that what I am saying? And it is already written on the screen, so you can have a basically read also. It's a 1 minute read only. Okay, so this was the last thing we discussed in the last session. Am I right? Who had attended, please just acknowledge. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we started with the statistical data analytics. Okay, मैंने आपको ये बताया था. I just added this image. Why I added this image right now? Okay, ये last time के मेरे इसमें नहीं थी. I had added just now before the session only. I get this image and which is very, what I say, very close to our topic. Okay, so just look at the image. मैं ये बोल रही हूँ कि आप सिर्फ इस image को देखो. Okay, उसके बारे में सोचो. Okay, क्योंकि already we had discussed so many things about the statistics, data analytics side, and then I want the answer from your side quickly. Okay, do it fast. Ma'am, like, for example, when a patient goes to a doctor, so like, he first takes a diagnosis, like what, like he asks you कि आपको क्या हुआ है. So that is kind of diagnostic analysis, that knowing what happened to you. Then ma'am, like when he gets to know that what has happened to you, then he predicts, okay, तो शायद आपको ये मतलब illness हो सकती है. And ma'am, Okay. after predicting that illness, he prescribes you some medicine. So ma'am, that is something which comes under prescriptive uh, analysis. Okay. Okay. And what is Yes. the predictive one in that And case? predictive is like when you tell the doctor your problem and he predicts, okay, so these are the symptoms, so maybe this must be your problem. So uh, I guess this would be the predictive. Ma'am, I don't know about uh, and like descriptive is like when a patient goes to the doctor and he actually tells what happened. And diagnosis is like doctor trying to know, okay, why did it happen? Maybe like you had cold because you drank a lot of cold water. So Okay. that can be diagnostic. But this is just a simple example to understand Yes, this ma'am. things, okay? Yes, And ma'am. somehow कहीं वो ठीक है पर कहीं वो इतना appropriate नहीं है data analytics को लेके. See, here we don't have any data ना. एक सिर्फ एक individual को लेके हम analysis नहीं करते कभी भी. Yes, ma'am. Just like for example purposes, I Yeah, was. yeah, perfectly fine. लेकिन आप इस इमेज को देखोगे और if you just imagine कि ये एक ग्राफ है, okay? Just imagine this is a graph. यहाँ पे एक axis है where the data is there and the another axis is here, जहाँ पे यहाँ पे एक एक्शन पार्ट है, जहाँ पे डिसीजन पार्ट है. दिस इज वन ऑफ द डिसीजन पार्ट which is a green in the color. Then there is a human inputs. Okay, so these are all the parameters we had to consider. Ma'am, I hope I'm actually explaining you the image. may I try? Yeah, sure. Ma'am, according to this graph, if we actually analyze this, the data is always constant in all the condition, whether the Right. analytical condition is a descriptive, diagnostic, Perfectly right. predictive, Yes, or prescriptive. exactly. Further, when there is a descriptive, there is a more human input. Decision and Exactly. actions are same. When there is Exactly. diagnostic, the human input is lesser than that. Predictive, much lesser, and in the prescriptive, definitely lesser one.
or Exactly. finally when the decision automation, there is a list and further action will be taken. So Exactly. if I had a study. Yeah. So basically, your point is very valid here and very important point that आप कोई भी डेटा लो, डेटा कांस्टेंट रहेगा. ऐसा नहीं रहेगा कि एक पर्टिकुलर डेटा पे हम डिस्क्रिप्टिव लगाएंगे, दूसरे डेटा पे डायग्नोस्टिक लगाएंगे, तीसरे पे प्रिडिक्टिव लगाएंगे और चौथे पे प्रिस्क्रिप्टिव लगाएंगे. इट इज नॉट लाइक दैट. इफ अ डेटा इज देयर, आपको ठहराना है. सी अंडरस्टैंड, आप मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, रिमेम्बर डेटा एनालिटिक्स के स्टेप्स बताए थे. सो व्हाट इज दैट? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको आपका क्वेश्चन डिसाइड करते आना चाहिए, राइट? वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर क्वेश्चन विल बी, and based on your question then your analytics starts. Are you remembering what thing we Ma'am, discussed? ma'am, Yes, tell me. ma'am, the descriptive part can be considered as the story part you told. हाँ, descriptive is a story part. See, try to understand. Story part in the sense, story नहीं है वो, okay? Story is something different. See, descriptive is a one kind of analytics, okay? Try to understand. First, I will just get into the analytics, descriptive analytics पे बात करते हैं. So, descriptive analytics tells us what happened. मतलब हमारे पास अभी result आ गया है हाथ में. Got it? Yes, ma'am. Okay, so this type of analysis helps describe or summarize the quantitative data by representing it. Okay, so if for example, अगर मैं आपको एक task देती हूँ, okay, let's say one task I am giving you, okay, so एक केस स्टडी की बात करते हैं यहाँ पे, okay. There is one software company, okay, wants to increase the number of their unique page views. आपको मैं ये सब एक्सप्लेन करती हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके. तो देयर वेबसाइट्स, okay, with their targets being say 3 lakhs, 3 lakhs हो गए ना? हाँ, 3 lakhs, okay, by using traffic data they capable of seeing in real time. Okay, and right now, okay, अब ये इनका, see, try to understand this. This is my बहुत सारे सजेशन देते रहेंगे अभी ये मेरे को, ठीक है. अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, we had started with one case study. Am I audible? Yes, ma'am. Perfectly fine. अभी मैं आपको एक एक चीज समझाती हूँ. हर एक कंपनी की जो वेबसाइट होती है, आप जैसे अभी यहाँ पे आप ज्वाइन करते हो या आप कोई भी वेबसाइट लेते हो, कोई भी वेबसाइट की बात कर रही हूँ मैं, हाँ, एप्लीकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, वेबसाइट की बात कर रही हूँ. देयर आर टू डिफरेंट थिंग. एप्लीकेशन आर डिफरेंट एंड वेबसाइट्स आर डिफरेंट. सो जैसे कोई भी आप वेबसाइट ले लो, तो वेबसाइट पे क्या होता है कि जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, मतलब कहीं पे भी, या आप उसको विजिट भी करते हो, तो दैट इज काउंट एज अ पेज व्यू. ओके, मतलब आपकी वेबसाइट का कितने लोगों ने व्यू किया. आप जैसे पोस्ट करते हो ना, जैसे स्टेटस पोस्ट करते हो और आप देखते हो हाउ मेनी व्यूज आर देयर, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब कितने लोगों ने आपका स्टेटस देखा, व्हाट्सएप की बात कर रही हूँ ये. वैसे ही Yes, ma'am. पेजेस का रहता है वेबसाइट का, ओके. वेबसाइट्स में क्या रहता है कि लाइक somebody view your page, okay, so whoever view, okay, all around the globe, okay. तो किसी एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उनका टारगेट है कि उनको 3 lakhs तक का करना है, okay. This is their caution. Try to understand, this is their caution, okay.
राइट ना, उनका जो करंट मंथ का उनका जो व्यूज रहे हैं, ओके, कस्टम मतलब जो विजिटर्स व्यू रहे हैं वो रहे हैं 1 लाख, ओके। इट मीन्स दैट दे आर नॉट ऑन द ट्रैक टू रीच देयर टारगेट। मतलब 1 लाख रहे हैं, उन्होंने ठहराया था जनवरी मंथ में कि मेरे व्यूज रहेंगे 3 लाख, लेकिन जनवरी मंथ के आखिरी में ऑन द 31st Jan व्हेन दे कैलकुलेटेड, तो उनको क्या दिखा कि सिर्फ कितने व्यूज मिले उनको, 1 लाख व्यू मिले। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब घटना हो चुकी है, समझे आप चीजों को? Yes, ma'am. ओके, सो द थिंग्स ऑलरेडी हैपेंड। आप इसकी डेफिनेशन देखो, व्हेन व्हाट हैपेंड। अब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस टेल्स अस व्हाट हैपेंड। अब ऑलरेडी चीजें घट चुकी है, मेरे को 1 लाख ही व्यू मिले हैं मेरे पेज पे, ओके। देयर आर फ्यू यूजर्स ओनली विजिटेड, दे आर नॉट ओनली 1 लाख, आई एम लैगिंग विद द 2 lakhs, राइट? Yes, ma'am. अभी आगे हम इसमें किस तरीके का एनालिटिक्स लगाएंगे? तब हम लगाएंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ओके। व्हाट इज दैट डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स टेल्स अस इन दैट केस? अब इस केस में हम कैसे करेंगे, टेल मी। आपको ये एग्जांपल थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है क्या? ये टेक्निकल हो रहा है क्या आपके लिए बहुत ज्यादा? हम कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं। इफ यू फाइंड डिफिकल्ट दिस, आई विल टेक अनदर एग्जांपल फॉर द डिस्क्रिप्टिव वन, ओके। Then can you please repeat the question you are asking? सी आई जस्ट वांट कि यहाँ पे मैंने टारगेट डिसाइड किया था, एक लेट्स एग्जांपल 2023 दिसंबर में मैंने टारगेट किया था कि मेरा वेबसाइट जो मेरा है कंपनी का, एक लेट्स वन एनी एग्जांपल, तो एक डमी कंपनी है, उसका वेबसाइट के विजिटर्स होने चाहिए, मेरा टारगेट था 3 लाख, ओके। अब जनवरी 2024 में जब मैंने 1 महीने बाद उसको देखा कि कितने मेरे विजिटर्स रहे, ट्रैफिक कितना रहा मेरे वेबसाइट पे, तो आई फाउंड ओनली 1 लाख। नाउ द क्वेश्चन इज So, क्लियर? ma'am, so it decreased now in 1 year by 2 lakhs. नहीं नहीं, 1 ईयर नहीं है, वही मैं बोल रही हूँ, 1 ईयर नहीं है, 1 महीने का है ये। दिस इज फॉर अ Okay, okay. 1 मंथ। देखो, कोई भी हम टारगेट जब डिसाइड करते हैं, तो टारगेट डिसाइड करके हम उसको एक टाइम फ्रेम देते हैं कि भाई 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 साल में, राइट? Yes, ma'am. सो सम Ma'am, शुड हैव, हाँ। ma'am, first of all, if we are lacking here 2 lakhs, the हम्म target was the achievement of 3 lakhs, but we achieved only 1 lakh, so that we are lacking 2 lakhs. So the first thing is we have lacked 2 lakhs, and further for the unique page views, which हम्म kind of viewers are actually watching. First of all, we could analyze this, हम्म whether they are from the market, or they are from the companies people, or which हम्म kind of people are actually try to reach our website. हम्म First, the pages. I mean, what we could say, the software which we have launched, we could update such according to the nowadays what is going on. I mean, the pages, how the pages should be looked like. हम्म So further, within 10 days, whether the increase, whether the liking are increasing or not. I mean, हम्म of few views of people, and further, the what the view the correct views are itna, and if there is comment section and further people are giving some kind of comment, so we can also analyze those, and further we could put our input there. Ma'am, ओके, हाँ। like there is a strategy that various companies use, हम्म like they call the repetition customers, huh? हम्म So that can also be a point by we can analyze that what are the repetitive customers on this specific web page. उसको हमने एनालाइज करने के बाद हमको मिलेगा क्या? What the Hmm? actions we had to take?
Ma'am, so basically our target is to achieve that 3 lakh target from 1 lakh. Hmm. So by calling the repetitive customers, focusing on the comments, watching what is the break point, that what is the feature we are not providing and the other websites or web pages are providing, and working on that can help it out. Okay, I'll tell you a very basic example. Okay, if you flash any basically trending things to the mob, basically who are in the age of 18 to say 25, let's say those trending things may be some active wear or sports wear or footwear. Okay, so such kind of basically flash basically on your screen will get more active visitors. Don't you think so? Yes, ma'am. ओके, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. अगर मेरे किसी स्क्रीन पे मतलब ऑन एनी स्क्रीन ऑफ माइंड, ओके, मे बी आपने देखा होगा आजकल गूगल पे आप करो उसके बाद भी आपको एडवर्टाइजमेंट फ्लैश हो रही है. वट एवर बी द यू आर यूजिंग, ओके, नॉट गूगल पे, विच एवर योर एप्लीकेशन यू आर यूजिंग, यू आर गेटिंग द एडवर्टाइजमेंट्स पैरेलल ऑन द स्क्रीन. ओके, बैकग्राउंड फोरग्राउंड पे आपको एड्स दिख रही है. अगर जैसे बीइंग मी, ओके, लाइक एज ऑफ 35 36, I am not interested buying any college going or active wear or a sports wear thing because my age is not prone to buy that. Okay, मैं साल 2 साल में एक आध बार sport shoes खरीदूंगी, right? I am not that kind of segment. Okay, but whereas you people, okay, definitely visit those basically websites immediately to look the offers. What are the offers for maybe college bags or sports bag or backpack or anything, right? Don't you think? Just imagine the human basically nature here. Yes, ma'am. Yeah, so such kind of things will increase the basically viewers. Okay, अब ये software company है, right? They are providing softwares, they are providing services, they are may providing products. Okay, तो उनके जो visitors रहेंगे, obviously they will be the vendors, they will be the contractors, they may be the networking people, they may be the quick hill type of people, those who are providing some antivirus kind of things, or they may be from the other companies, they want certain services. Okay, अब उनके वहां पे ये फ्लैश होना जरूरी है, right? Are you getting my point? Yes, ma'am. Okay, so such kind of basically websites or such kind of basically promotions need to be happened to the those companies websites or those companies people. Okay, so that they can visit this software company website and increase the view. Is it simple, clear or not clear? Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. we will again discuss one more example here. Okay, so I'm just having a one supermarket. Okay, and this conducts one annual research, or we can say customer survey, and the survey is based on satisfaction. Okay, customer satisfaction survey it is. Okay, for better understand the quality of their services across its store. Okay, अब ये क्यों हुआ ऐसे, like why this happened? अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रही हूँ why this happened, क्योंकि हो सकता है कि ये जो सुपरमार्केट है, ओके, ये जो सुपरमार्केट है इनका कहीं तो कस्टमर चर्निंग हो रहा होगा. डू यू नो द मीनिंग ऑफ कस्टमर चर्निंग? और वी कैन से कस्टमर कंप्लेंट्स बार बार आ रहे होंगे. सो बिकॉज ऑफ दिस दे फेल्ड विद सर्टन थिंग्स, मे बी उनका सेल डिक्रीज हो रहा होगा. ओके, सो कॉज क्या होगा? सेल डिक्रीज हो रहा होगा, राइट? डिक्रीज इन द सेल. अरे अंडरस्टैंडिंग, ये रीजन होगा, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, अभी एक सर्वे करना है मेरे कस्टमर्स को लेके.
गॉट इट? Yes, ma'am. अब उसमें उन्होंने क्या पाया? In that survey, they asked their customer to rate their satisfaction on the scale of say 1 to 10. On the scale of say 1 to 10. Okay. For the different matrix. Okay. For different parameters. So उन्होंने 4 parameters लिए उन्होंने. What are those parameters they had taken? अब वो parameters बहुत important होते हैं हमेशा. कि check out the speed. आपको कितना टाइम लगा बिल के लिए? ओके. देन स्टाफ हेल्प आपको अच्छी लगी क्या? हेल्पफुल लगे क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग ना मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. फिर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी. ये सिंपल चीजें. आप इमेजिन करो आप डीमार्ट गए हो. एवरीबडी लाइक नो द डीमार्ट, राइट? डीमार्ट इज वेरी कॉमन एंड पॉपुलर चेन इन द इंडिया. ओके. सो डीमार्ट गए हो आप, तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहेगा? क्यों डीमार्ट के कस्टमर्स कम हो रहे हैं? लाइक दैट दे आर जस्ट एनालाइजिंग. ओके. और दूसरा एक और उन्होंने लिया, वैल्यू फॉर मनी. अब ये 4 पैरामीटर्स लिए उन्होंने. अब कैसे करेंगे वो? हाउ दे डू द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स? Ma'am, first of all, they will individually they will analyze on each हाँ. parameters, and further they will put some human effort for the what the actually common things we will get, and ये yes, हाँ. ma'am. Yes, And yes. You continue. Yes, I'm listening. yes, ma'am. And finally, we will get the exact result, or we could say the exact answer that what we could do in this to finally to increase our हाँ customer. ठीक है ना. अभी अभी देखो यहाँ पे. अब जैसे यहाँ पे ये कस्टमर है, तो मैं यहाँ पे एक और ऐड करती हूँ. इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट. ओके. ये कस्टमर है, ठीक है. मान लो ये कस्टमर ए है. ओके. अब उसने स्पीड का बताया मेरे को, तो 1 घंटा तो लाइन में लग गया, तो मैं तो उसको 3 ही मार्क दूंगी. हेल्पफुल रहे, ठीक है. प्रोडक्ट भी अवेलेबल रहे, ठीक है. वैल्यू फॉर मनी भी 6 दे दिया. एक बी नाम का कस्टमर है, उसने स्पीड बोला कि स्पीड तो मैं यहाँ पे 1 दूंगा. हेल्पफुल वहां पे हो सकता है कि उसको किसी ने हेल्प ही नहीं करी, उसने 3 दे दिया. प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी वो जो ढूंढ रहा था वो उसको मिला नहीं. उसके बाद वैल्यू फॉर मनी भी उसने एवरेज दे दिया. सी कस्टमर है. आप समझ रहे हो डेटा कैसे कलेक्ट हो रहा है ये? Yes, ma'am. ओके. सो सच काइंड ऑफ डेटा वी आर कलेक्टिंग. मतलब ये ऐसे कलेक्ट कर रहे हैं. मतलब हो सकता है ये हम either we can fill the Google form, either we can give them a hard copy of the page and then collect the data, or either we can send them a one link to their basically mobile phone or a WhatsApp to just fill a quick basically analysis. आजकल सर्वे के लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है. You might be knowing about that, right? So they are collecting that thing. अब इसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे? How we will get insight into it? This is my question now. हम अभी डेटा एनालिटिक्स का कंप्लीट कोर कर रहे हैं, एंड आई वांट आंसर आउट फॉर दिस. ओके. Ma'am, what? Sorry, can you ask again? सी अभी हम ये डेटा एनालिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं. यहाँ से हमारा क्लियर होगा विजन की व्हाट एग्जैक्टली द डेटा एनालिटिक्स इज. Ma'am, on the basis of ratings, I think total ratings of हाँ. speed, health, product, and money. हाँ. So हाँ. first we analyze which part is getting lower, हाँ. and we will work on that first, and then sequence wise we will work on that. हाँ. पर कैसे? मतलब कैलकुलेट करेंगे कैसे? लाइक दिस इज व्हाट माय Ma'am, like क्वेश्चन. we can use the help of data visualization using some kinds of graphs to like know that किस section में हम लोग को सबसे कम rating मिली है, and like and by analyzing that I guess we can then work on it. And ma'am, we can collect these ratings from like as you said surveys and customer satisfaction reports from all these way. अग्री सब बराबर है. Ma'am,
बट इमेजिन इन द वेरी ब्रॉडर कैटेगरी, ओके। हम एक इंडिया लेवल के लिए बात कर रहे हैं। जस्ट सोचो, आप डीमार्ट में हो, taking the डीमार्ट के average. आपको डीमार्ट का डेटा एनालिटिक्स करना है कि अभी मेरे को डीमार्ट में कस्टमर कम हो रहे हैं, दे वांट टू रिटेन देयर कस्टमर, ओके। सो वेयर दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम तो है कि भाई मेरे कस्टमर जा रहे हैं, वो रिलायंस स्मार्ट से खरीद रहे चीजें, मेरे से नहीं खरीद रहे, ओके। सिंपल लॉजिक है, दे आर कॉम्पिटिटर्स। So Then DMart, ma'am, I guess they'll have to compare their factors from their competitors, ki like what Reliance is doing better than them. So ma'am, this is a kind of analysis that they can also do. For example, if they are selling a thing for 80 rupees and Reliance is selling the same thing for 60 rupees, वो so तो they मनी will have, फैक्टर हुआ, वो मनी फैक्टर हुआ। Ma'am, yes ma'am. we could analyze here basically two types. First of all, individually, these parameters are getting which parameter is getting more point, and further collectively, which one is getting more point. I mean, how much we are getting. So finally, we could extract that what we could do better. For example, if we get more points for speed, definitely speed is good. Then we could do much better on the health, product, and money. I mean, we could analyze things like this. Or second is collectively speed, health, product, money. When we collectively, when what the data is coming. I mean, ठीक है, द अप्रोच इज लिटिल बिट ओके। अब मैं आपको एक और यहाँ पे सी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इतने से टेबल पे कोई डेटा एनालिटिक्स नहीं करते हैं। इतना सा अगर डेटा है तो डेटा एनालिटिक्स एनालिस्ट की जरूरत ही नहीं है किसी को, राइट? जस्ट इमेजिन, इमेजिन ये इंडिया लेवल पे बात हो रही है, ओके। और इंडिया लेवल में अगर मान लो कि टोटल ऑल ओवर इंडिया इफ देर आर से 7,000 डीमार्ट्स आउटलेट, okay, and they had conducted all outlets with this survey. तो आपके सामने ये जो टेबल एक मैंने बनाया है ना, ओके, वो कम से कम 500 से 800 लोगों का एक टेबल एक डीमार्ट से आएगा। आप समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब एक डीमार्ट से yes, ma'am. मेरे पास आएगा, मतलब 7,000 डीमार्ट से मेरे पास कितने आएंगे ये टेबल? कम से कम 800, एवरेज की बात कर रही हूँ मैं। देखो, एक 7,000 है, 7,000 के 800, तो एक रफली जो कस्टमर्स रहेंगे वो उनको कांटेक्ट करेंगे, मतलब 1,000 लोगों को उन्होंने सर्वे दिया, लेकिन 1,000 के 1,000 तो भरेंगे नहीं, तो एवरेजली 800 लोगों ने भरा, समझो, ठीक है। मतलब एक सर्वे जैसे मैंने भरा, आपने नहीं भरा, किसी और ने भरा, तो ऐसे सब मिला के 800 लोगों ने उनके एक आउटलेट से, समझ लो अगर जस्ट आई मीन मुंबई, सो अंधेरी वाले आउटलेट से 800 लोगों ने डीमार्ट का एक सर्वे भरा। सपोज लो दिल्ली वाले आउटलेट में द्वारका के डीमार्ट से 1,000 लोगों ने भरा। ऐसे करके कलेक्टिवली 800 लोगों का एक एवरेज हमने निकाल के हमारे पास एक डेटा आया। आप समझ रहे हो आप चीजों को क्या बोल रही हूँ मैं? Yes, ma'am. अब मुझे आंसर चाहिए कि हाउ वी विल गो विद दिस अप्रोच। यहां पे आएगा स्टैटिस्टिक्स। अब क्यों आएगा स्टैटिस्टिक्स? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है कि डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट हो चुका है एंड नाउ वी विल बी एनालाइजिंग इट। तो सबसे पहले हमको हर एक लोकेशन के सर्वे का हर एक पैरामीटर का एवरेज निकालना पड़ेगा। आपको नहीं लगता है? Yes, ma'am. ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज। ओके, नॉट ओके, आप एग्री हो नहीं एग्री हो, पहले ये बताओ, सब लोगों की पूछ रही हूँ मैं। Yes, ma'am. Ma'am, the average of each factor from the each outlet, na? एग्जैक्टली मतलब सबसे पहले तो ये डेटा कलेक्शन हुआ, आप समझ रहे हो? दिस इज माय स्टेप नंबर 1। फिर दूसरा अप्रोच क्या रहा मेरा? मेरे पास क्वेश्चन तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, मेरे पास प्रॉब्लम का है, मतलब क्वेश्चन है मेरे सामने। सो अब मैं अप्रोचेस लगा रही हूँ। तो स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा मेरा? व्हाट विल बी द स्टेप नंबर 2? कि मैं एवरेज लगाऊंगी यहाँ पे, एवरेज फॉर ईच, सॉरी, फॉर ईच लोकेशन, फॉर ईच पैरामीटर। समझे आप?
for each location, for each parameter. Yes, ma'am. Yeah. So what we will doing? See what exactly we landed with statistics. Agree? Ma'am, Not we agree? use a charts form to analyze. Then next step. चार्ट में हम इतने सारे डेटा को डालेंगे क्या? जस्ट इमेजिन, हमको उसको कॉन्क्रीट करना पड़ेगा ना डेटा. चार्ट बनेगा, अग्री. चार्ट कैसे बनेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई जस्ट शो यू हियर. ओके, चार्ट तो बनना है, ऐसे चार्ट बनेगा. पर यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगी? स्पीड बनाऊंगी. तो स्पीड का मेरा एक बार ग्राफ बनेगा, राइट. फिर मेरे पास आएगा, मान लो हेल्प का, तो हेल्प के लिए एक बार ग्राफ बनेगा. आप यही बोल रहे हो ना? यस मैम. राइट. पर ये जो हेल्प के लिए मैं बार ग्राफ बना रही हूँ यहाँ पे, सो दिस विल बी कम विद द डेटा हियर ना. यहाँ पे डेटा तो आएगा ना, एवरेज. यस, आप करेक्ट. क्या हर एक अलग अलग सर्वे का थोड़ी ना बार ग्राफ बनाओगे ना. You will not create a bar graph for 5,60,000 survey. You will be create average of every parameters and then you will create a bar graph. Are you clear with that? Yes, ma'am. So bar graph is nothing, it's your visualization, right? आप visualize करोगे, पर उसके पहले आपको मेथड लगानी पड़ेगी ना स्टैटिस्टिक्स की. Yes. Agree? Clear? Yes, ma'am. Okay, so it will concluded that while customers are relatively highly satisfied with the staff helpness. Okay, अगर हम एक जनरल बात करें, इस डेटा को देखते हुए हेल्प में नहीं दिखेगा. अगर हम यहाँ पे एक अप्रोच से अगर बात करें ना, so by calculating average rating for each parameter, okay, what we got, it is concluded दैट अगर आप सिर्फ इस छोटे से टेबल को ही एनालिस करोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रोडक्ट को लेके वो ज्यादा सेटिस्फाइड रहे हैं. कस्टमर किस पे सेटिस्फाइड रहे हैं? कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, customers are, or we can say relatively highly satisfied with the product. Product मतलब product availability. दोन्ही बंद कर, मी गुणून देईल तुला. क्लियर? Yes, ma'am. Okay, then second, they might be happy with the money. Okay, value to the money. Okay, मतलब ऐसे ऑर्डर में बनते जाएगा. मतलब प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे कोई सवाल नहीं कर रहे कस्टमर. प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे तो वो हैप्पी है कि भाई है, सारे प्रोडक्ट्स हमको जो चाहिए वो मिल रहा है यहाँ पे. उनको कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद उनका वो भी प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत महंगे हैं. वैल्यू फॉर द मनी है, क्योंकि आप देखो डेटा खुद ही आप एनालाइज करो, आंखों से ही समझ में आ रहा है, राइट. तो दिस टू पैरामीटर्स पे हमको काम नहीं करना है. अगर डी मार्ट के मैनेजमेंट को आपको कंक्लूजन देना है, ओके, टू प्रेजेंट इट, सो व्हाट यू आर गोइंग टू सपोज टू प्रेजेंट. आप समझ रहे हो? क्योंकि देखो, जो हमने डेटा एनालिटिक्स के स्टेप पढ़ी थी लास्ट टाइम, यू डिड डिस्कस, ऑलरेडी डिस्कस. डिफाइन द क्वेश्चन, प्रॉब्लम डिफाइनिंग, राइट. ये तो ऑलरेडी हमारा हो चुका है. भाई कस्टमर जा रहे हैं, ओके, वी वांट टू रिटेन द कस्टमर. We collected the data with the help of survey. We cleaned that data by applying statistical method like average, simple average लगाया. And then we started analyzing the data. Analyzing मतलब हम analysis कर रहे हैं. Analysis में हमने क्या पाया कि product availability कोई दिक्कत नहीं है. Value to the money कोई दिक्कत नहीं है. Because they are showing the good basically क्या बोलते हैं कस्टमर का, उसके ऊपर जो स्केल पे दिया है 1 to 10, तो वो towards above 8 है. Got it? Are you understanding this or not understanding?
Yes, मुझे ma'am. समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? Yes, ma'am. Okay, fine. Then they will also find Ma'am, कि help or speed. Yeah. Ma'am, sorry, I'm interrupting in between. Ma'am, please, if possible, please, could you please share this file? I mean, the question answer of session, the whole things, because whenever we will look at this, we will actually we could imagine what we got in that particular day. Yeah, definitely. At the end of today's session, I'm going to share this document with you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, because I am relating with the about topic which we already discussed in the last class, right? तो यहाँ पे अगर आप Yes, ma'am. देखोगे तो प्रॉब्लम डिफाइन हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है. डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं हम. मेरे कस्टमर नहीं बच रहे हैं मेरे साथ. ओके, मेरे कस्टमर नहीं रह रहे हैं. ओके, मतलब जो मैं देखती थी कस्टमर्स, जितना मेरे सेल या जितने कस्टमर्स मुझे विजुअली दिखाई देते थे वो दिखते नहीं है मेरे शोरूम्स में. So this is my problem. Okay, now I collected the data with the help of survey. Then I clean that data. I clean that data मतलब कुछ लोगों ने भरा है, कुछ लोगों ने नहीं भरा है, कुछ लोगों ने empty डॉट डॉट डाल के बस fill कर दिया. See, people do so all these things. So data can collected, but that is not clean. So I had to clean that data. Okay, मुझे null values remove करने पड़ेंगे, dot remove करने पड़ेंगे, not available जो है वो सब remove करना पड़ेगा. And the pure data I will be working on it. That will be my sample. And then I will be start analyzing it. Analyzing मतलब क्या? I will start applying the statistical method. Statistical method में सबसे पहले मैंने अप्लाई किया, ये बहुत सिंपल, मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने सिर्फ एवरेज लगाया, सारे पैरामीटर्स को एवरेज पे कैलकुलेट किया. 10 के बीच का मैंने एवरेज निकाल के स्केल अबाउ 8 जो है वो मैं सोचूंगी कि कस्टमर हैप्पी है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है उसको. और जो भी मतलब जो पैरामीटर्स का बिलो 8 जा रहा है, मतलब वो सबसे ज्यादा रेड फ्लैग है मेरे लिए. ओके, सो आई हैड टू टेक केयर अबाउट इट. तो मैंने देखा कि कस्टमर का जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का उन्होंने जो उनके ओपिनियंस दिए हैं थ्रू द सर्वे, सो दैट इज ऑल ओके. मतलब उनको हिसाब से प्रोडक्ट अवेलेबल है मेरे शोरूम्स में. इन माय आउटलेट एवरी प्रोडक्ट व्हिचएवर बी द प्रोडक्ट कस्टमर इज आस्किंग मी, इट इज अवेलेबल. ओके, गोइंग फॉर द वैल्यू फॉर द मनी, इट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि मेरा टेबल ही मैंने ऐसे लिखा हुआ है, राइट? आई हैड क्रिएटेड अ टेबल इन दिस वे. तो बाय लुकिंग इनटू जस्ट अ टेबल यू कैन इमेजिन कि हाँ इसका एवरेज भी अबाउ 8 ही आ रहा होगा. व्हेन इट कम्स टू स्पीड एंड हेल्प, ओके, वहां पे ही कहीं तो मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट? सो जस्ट कमिंग टू द स्पीड, तो स्पीड में भी ऐसा है कि मतलब सॉरी हेल्प, अगर हेल्प की बात करते हैं तो हेल्प इज ऑल्सो मतलब थर्ड कैटेगरी में आएगा, लेकिन इट इज बिलो 8. सो हेल्प आई हैड टू टेक केयर. मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट सपोज टू डू हियर, आई विल बी हैविंग मोर एग्जीक्यूटिव. मुझे मुझे स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, मतलब फ्लोर स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, right? I had to recruit more floor staff. Are you understanding this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What are the actions I am supposed to suggest कि भाई फ्लोर स्टाफ बढ़ाओ. अब फ्लोर स्टाफ एकदम से सब जगह पे तो नहीं बढ़ा सकते ना. अगेन इट विल कम टू द रेवेन्यू साइड कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. तो मुझे फिर मैं इंडिविजुअल आउटलेट के स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करूंगी कि भाई दिल्ली के द्वारका में स्टाफ कम पड़ रहा है कि मुंबई के अंधेरी में कम पड़ रहा है कि समवेयर इनटू अनदर लोकेशन वहां कम पड़ रहा है. सो देयर वेयर एवर इट इज लेस, देयर आई विल बी गोइंग विद this particularly what I say ऑप्शन. ओके, मतलब ये मैं ऑप्शन एक्सेप्ट करूंगी. और अगर जहां और कहीं देखो एवरेजली देखा जाए तो पूरे इंडिया का प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जहां स्टाफ कम है वहां पे मैं स्टाफ रिक्रूट करूंगी. बट जहां पे ऑलरेडी स्टाफ है पर स्टिल कस्टमर तो नहीं बच रहे ना मेरे वहां पे, तो मैं वहां पे आई विल अरेंज द ट्रेनिंग टू देम. ओके, कस्टमर फ्लोर जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं उनको ट्रेनिंग दूंगी. ओके, कि आप कस्टमर्स के डाउट्स कैसे क्लियर करो, उनके क्या प्रॉब्लम्स है,
वो प्रॉब्लम्स अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहे तो यू कनेक्ट विद द मैनेजर और योर सीनियर पर्सन. आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई आप क्वेश्चन पूछते हो, अगर उनको नहीं आंसर देते आते तो तुरंत उनके किसी कलीग को बुलाते हैं और वो आपको आंसर देते हैं. हैव यू ऑब्जर्व दिस? Yes, ma'am. तो दिस इज काइंड ऑफ बेसिकली उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर आपके पास आपके पास इतने क्वेश्चंस की आंसर देने की आपकी ये है. जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो या कहीं पे भी आप, मतलब इन जनरल एग्जांपल बता रही हूँ, इफ यू विजिट टू एनी मोबाइल शॉप, तो अगर आप जैसे बड़े शोरूम में विजिट कर रहे हो तो आप उससे पूछा, सब स्पेसिफिकेशन पूछा, ये पूछा, वो पूछा, वो पूछा, वो उन्होंने सब बता दिया. फिर आप बात करते हो ठीक है मुझे ये लेना है लेकिन आप मुझे कितना डिस्काउंट दोगे, तो वो तुरंत किसी और को बुलाते हैं. ओके, एंड दे विल एक्सप्लेन यू कि इस कार्ड पे इतना आपको रिटर्न है, उस कार्ड पे आप ईएमआई करवा लो, बजाज फाइनेंस का ये ऑप्शन है. तो दे विल एक्सप्लेन यू दिस बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट आंसरेबल टू योर क्वेश्चन डिस्काउंट वाला. वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के आंसर्स दे सकते हैं. तो बोथ आर स्लो स्टाफ, लेकिन हर एक का हेल्प करने का तरीका अलग है, उसका उसका जोन अलग है. ओके, वो उतने ही जोन पे उसके आंसर्स देगा. ओके, जैसे ही आप उसको आगे के इसमें पूछोगे, ही इज नॉट आंसरेबल, ही और शी इज नॉट आंसरेबल, वो तुरंत उसके मैनेजर को बुला लेगा. ओके, सो सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिटेन योर कस्टमर. गॉट इट? Yes, ma'am. And then the next is speed. What is the speed problem? Ma'am, this could be about if we want to survey something and the floor staff is absent there, or they have the least training to give us the particular information about such particular thing. And further, when we are going to in the payment section, there is a one or two or three or lesser section, lesser Exactly. So we will say the billing billing counter. counter. Yeah, yeah. Yeah. So the billing counters. Okay. So the billing counter is a major concern in the DMart. Okay. All over India. I don't know whether you had read this case study or not, but this is one of the data analytics case study. Actual case study है ये. Okay. Yes, बहुत ma'am. descriptive case study है ये. मैंने उसको बहुत ही concise करके आपको explain किया है at your understanding. Yes, So ma'am. Big Bazaar had suffered this a lot. right. So the billing counter is very less on the DMart, and because of that, there is a kiosk. कितने लोग कार्ट की रखी हुई चीजें ऐसे के ऐसे रख के निकल जाते हैं. That is the main problem they are facing. So nowadays they started so many different basically options to reduce this kind of problems and to maintain their customers and make the customers happy. So वो उनके solutions they had come with, but they come with this descriptive analytics. अभी क्लियर हुआ descriptive analytics मतलब क्या होता है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Even ma'am, Okay. even I have recently, when you are giving this very practical example, we are facing or we are viewing a lot when I started this course, and I've given more focus on these things. I have literally I have seen in difference between shopper stop and lifestyle, that shopper stops are actually providing the billing. I mean the main there is a main billing counter, and as well as for the small products, for example cosmetics or goggles, it is etc, perfumes, they are providing immediate billing. They will Accessory, yeah, accessory exactly. counter उन्होंने अलग कर दिया है, right? Yeah, exactly. Because to rectify all this, क्योंकि अगर मैं एक चीज खरीद रही हूँ, 100 रुपए की चीज खरीद रही हूँ, अगर मुझे आधा घंटा से वो बिलिंग के लिए वेट करना पड़ेगा, so why should I go there? Okay, it's a very normal thing na. Yeah, time is precious, so such kind of things happen with the customers, and that's why they had rectified. Not only there are so many outlets they rectified to maintain their customer satisfaction. Okay, to maintain the customers happy. Okay, so this is how the descriptive, क्योंकि हो चुकी ही घटना है, मतलब पहले कस्टमर्स थे, कम हो गए, अब कम हो गए, तो अभी क्या करना है, तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव. इज इट क्लियर? राहुल, ऋत्विक, सॉरी ऋतिक नहीं, नैतिक, Yes, ma'am. Yes, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. ओके. अगर मान लो, जस्ट टेक अ एग्जांपल, जस्ट फॉर मतलब मुझे जस्ट जानना है आपसे, स्पीड भी अच्छी रहती, कोई दिक्कत नहीं रहती, समझो, जस्ट अ रिवर्स केस ऑफ दिस केस स्टडी.
स्पीड भी ओके रहती, हेल्प भी ओके रहती, मनी फॉर द वैल्यू भी ओके रहती। अगर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का कंसर्न रहता तो क्या करते आप? व्हाट इज योर सजेशन? कैन क्विकली जस्ट बाय थिंकिंग कैन यू जस्ट गिव मी द आंसर? मैम आई गेस चेंज द मैन्युफैक्चर, लाइक जहां से प्रोडक्ट स्टोर्स में आता है, लाइक चेंज दैट पर्सन। adding more प्रोडक्ट manufacturing क्वालिटी की steps. बात नहीं हो रही है। हु इज गिविंग द आंसर ऑफ दैट? मैन्युफैक्चरिंग वाला ना। प्रोडक्ट Ma'am, क्वालिटी की not, बात नहीं, ma'am, प्रोडक्ट I अवेलेबिलिटी की didn't बात meant है। manufacturer. I meant the person who produces the products to the store. Because, ma'am, like if he doesn't have the availability, then why to like take एग्जैक्टली, products from him? ओके, दैट वे यू आर, मतलब वेंडर की बात कर रहे हो आप, Yes, ma'am. वेंडर की Yes, बात ma'am. कर रहे हो, यू Yes, आर टॉकिंग अबाउट वेंडर नॉट द मैन्युफैक्चरर, yes, राइट? ma'am. Yes, तो ma'am. वेंडर, ठीक है, वेंडर एक हो गया। एक एक चीज हमने वेंडर डिस्कस करी, ओके। मैम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स भी तो देखा जा सकता है कि लाइक मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ही काफ़ी कम है, लाइक राइस ही है। राइस में मतलब प्रोडक्ट्स उनके काफ़ी स्टोर कम है, तो वो इंक्रीज किया जा सकता है और लाइक स्पेस एरिया भी इंक्रीज कर सकते हैं ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हो सके। ओके, Ma'am, we could इंक्रीजिंग द also see, रैक्स, यू मीन टू से इंक्रीजिंग द रैक्स? यस मैम। ma'am, we और could स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स भी देखा जा सकता है कि लाइक वहाँ पे अगर कोई कस्टमर आते भी हैं तो उनकी क्या स्पेसिफिकेशन, लाइक वो क्या प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं, वो भी एक एनालिसिस पार्ट में तो आ सकता है। हाँ, मैं आपको एक इसका एग्जांपल बताती हूँ। एक्चुअल सिचुएशन, हम ये इस केस के लिए अगर हम इन डिटेल जाते हैं, तो अगर आप देखेंगे ना, तो लाइक इफ यू जस्ट गो इनटू द साउथ जोन of or maybe the mid section of the India where the DMart is there, they are having ample of rice options, rice varieties रहती है। बासमती की 4 varieties अलग रहेंगी, some another rice की 2-3 और varieties रहेंगी, local rice की उनकी और 2-3 varieties रहेंगी, because the people prefer such kind of varieties over there. Okay, when it comes to more towards the south, so south में hardly 2 या 3 टाइप के ही rice prefer करते हैं वो लोग, so they will not keep all the varieties of rice over there. Are you understanding this? So they will decide कि मुझे कितना product available करवाना है. Is it clear to you? Yes, यस ma'am. मैम। Ma'am, the shortage of products, which is the problem, can be increased by adding more vendors, not sticking to the only one vendor. राइट, तो वेंडर तो हमने बात कर ली, मतलब हम वेंडर के ऊपर काम करेंगे अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो। सो वेंडर वी डिस्कस्ड। इंक्रीजिंग द रैक्स, इंक्रीजिंग द रैक्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट मतलब प्रोडक्ट्स टाइप्स, और वो प्रोडक्ट्स दोनों के लिए जगह करेंगे, राइट? एक और कैटेगरी आती है इसमें। कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके, बट दे आर नॉट मेक इट इनसाइड, मतलब साइड पे दिखाई नहीं देता है, मतलब लोगों को दिखते नहीं है वो। सो दे विल बी इनसाइड द लीड टू द वाइडर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स being added to their shelf, and that shelves are visible. Are you understanding this? यस यस मैम। मैम, मतलब विजिबल डिस्प्ले में नहीं रखे रहते प्रोडक्ट, तो हमें हाँ, पता ही कभी नहीं कभी चलता है कि वो पता ही प्रोडक्ट नहीं रहता है, अवेलेबल है भी एग्जैक्टली। या नहीं। Somewhere they are into the back of shelf, somewhere they are into their store. They are not properly organized the things. So maybe The, because of that also the product मतलब उनको अवेलेबल नहीं है ऐसा हमारे को लगता है, but where it is available. But why we feel so? Because being a customer, अगर हम इमेजिन करें कि हमको ऐसा लगता है अरे ये तो मिला ही नहीं चीज, यहाँ पे इतनी बड़ा शोरूम है लेकिन हमको ये मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? वहां था लेकिन हमको नहीं मिला। वहां था मतलब क्या था कि वहां पे डिस्प्ले में नहीं था, इसलिए हमने नहीं देखा ना। So proper visibility of products on the shelf is also the part of product availability. Are you understanding this? यस मैम। Is it clear, everyone? Yes, ma'am. यस मैम। फाइन, सो दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ओके, अब इसके लिए आपको मैंने एक टास्क दिया है। ओके, यू हैव टू क्रिएट योर ओन डेटा सेट। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक सी हमने डिस्कस किया है, केस डिस्कस किया है, क्या अप्रोच लगाना है ये डिस्कस किया है, मतलब सारे जो स्टेप्स है डेटा एनालिटिक्स के वो सारे डिस्कस किए फॉर द डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स। की प्रॉब्लम क्या है? कलेक्शन। अब ये कलेक्शन का जो पार्ट है दैट यू हैव टू डू इट बाय योर मैनुअल वे। एक सिंपल सा डेटा क्रिएट करो, आप कहीं से उठा भी सकते हो, उसको रीनेम करो, ओके, एंड जस्ट अप्लाई दिस। आप ये मुझे यू हैव टू डू इट, ओके, एज अ काइंड ऑफ असाइनमेंट।
Okay, so you have to generate your own data set, मतलब you have to create your own data set, take your own parameters. जरूरी नहीं कि आपको यही parameters चाहिए है, आप दूसरे भी ले सकते हो अगर आप थोड़ा और अच्छा imagine कर लो तो. that gives you more clear and more मतलब understanding about the topic. और आप एक properly step by step पूरा analytics करके उसकी solutioning दो मुझे. समझे आप? क्वेश्चन क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Fine. The next thing we are having, that is a diagnostic analytics. So diagnostic analytics provides a crucial information about why a trend or a relationship occurred, is useful for a professional aiming. Professional aiming मतलब business के लिए ये important है to support any decision with the data. Normally diagnostic analytics जो होता है वो Excel में ही होता है. मतलब नॉर्मली एनालिटिक्स जो बेसिक टूल हम जो यूज करते हैं वो एक्सेल के थ्रू ही करेंगे. तो जो आपको ये जो असाइनमेंट दिया है दैट आई एम एक्सपेक्टिंग थ्रू द एक्सेल ओनली. ओके, सो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डेटा टू डिटरमाइन द कॉजेस ऑफ द ट्रेंड्स एंड कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. कैसे करेंगे ये? टेल मी फास्ट हाउ वी आर गोइंग टू बेसिकली स्टार्ट विथ एनी एग्जांपल. Uh, for example, if like we see a trend, how should I like trends are usually shown through a line graph, right? Like with time, is the sales increasing? Is the sales decreasing? So when we get to know, okay, the sales are decreasing. So after that, we find as to why is this happening? Like what wrong are we doing so that the sales are decreasing with the increase in time? So I guess that is something to do with diagnostic analysis. Ma'am, I think the first question what you have asked about the software company, that is one of the good example of diagnostic analysis because page views wala, the page views wala is not a diagnostic one. Page views wala is a descriptive one only. Okay, ma'am. डायग्नोस्टिक के लिए देखो देयर आर 2 पैरामीटर्स नीडेड. मतलब हमको यहाँ पे डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के लिए हम कोरिलेशन ही अप्लाई करते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन द डिस्क्रिप्टिव वन वी हैड अप्लाइड द सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन, ये सब निकाल सकते हैं हम. ओके, वट एवर आई वॉन्ट आई कैन हैव इट. ओके, कि कितने लोगों को स्पीड से कंसर्न था, कितने लोगों को अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से कंसर्न था, वैल्यू फॉर मनी से कंसर्न था. एवरीथिंग वी कैन हैव इट विद द मीन मोड मीडियन, राइट, इन द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. Yes, बट वेयर so like that's what I'm saying. No, like with time increase and decrease, like with respect to something, what is the other quantity doing? Is it increasing or decreasing? So like is it similar to correlation only? It is similar to correlation only, right? it is similar to correlation. nahi, we are going to use correlation statistical method for a diagnostic analytics. Ma'am, Okay, actually, this ma'am. is one is in the diagnostic analytic. There is a one step ahead rather than descriptive because here the diagnostic. I mean, we have already diagnosed. For example, if you will take example, I'm just taking normally example. We have the answer what you have given. If we increase the floor staff, to where where we need to increase the floor staff. So there is already the problem is already diagnosed. Now we will get the particular answer. See, floor staff is one of the concern we identified using descriptive analytics, and then the next step can be a diagnostic analytics. That is possible. You are saying this way? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है कि क्या पैरामीटर्स है. हो सकता है कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती, हो सकता है कि आपने नॉर्थ के आपके डिपार्टमेंटल स्टोर पे जो स्टाफ रिक्रूट किया है वो साउथ का किया है, तो उनको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है. दैट कैन बी वन ऑफ द पैरामीटर्स. Yes, ma'am. Same thing. Yes, ma'am. Same kind of situation can comes. There we will be applying diagnostic analytics, but एक सिंपल अप्रोच में डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का कोई एग्जांपल? Ma'am, like monthly analysis we can do. We can put in diagnostic for any store. Okay. हाँ, Ma'am, अगर there हम could be the डिपार्टमेंटल स्टोर relationship.
अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर को ही लेके अगर हम डिस्कस करें तो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स भी हो सकता है. Ma'am, maybe like constructing a scatter plot. See, that is one of the basically tool. Who is giving me this answer? Ma'am, I did. Krish. Krish. Okay. So Krish basically वो एक टूल है, मतलब उससे मैं बताऊंगा कि या बताऊंगी कि हाँ ये सारा ऐसे प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमको पहले प्रॉब्लम एनालिसिस करना है ना. दैट इज अ डायग्नोस्टिक. Okay, ma'am. एक Ma'am, सिंपल for example, एग्जांपल. ma'am, we have taken, and though the word is diagnostic is written, so it came in general. It came in my mind that if there is, I mean, for example, if we could take the Fortis Hospital example, in last maybe the last year there were so many patients, people are coming there, but nowadays the people are coming less, or we could say that they are giving the negative marking. ना 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 ना, ये फिर से डिस्क्रिप्टिव पे जा रहे हो आप. Okay, हो okay, चुकी घटना पे हम बात कर रहे हैं. दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव वन. okay, okay. Ma'am, may I try? या श्योर श्योर. Like most customers buy a product in the winter season, हाँ. but we noticed a sudden change in the like purchase क्लाइमेट. in yeah. हम्म. तो यस मैम यू लाइक समर में आर. बहुत यस चेंज हो यस. जाते हैं उनके पैटर्न्स, परचेस पैटर्न. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. यहाँ पे हम कस्टमर बिहेवियर को एग्जामिन कर सकते हैं. सो दैट इज अ मतलब आने वाली सिचुएशन को लेके. ओके. से फॉर एग्जांपल कंपनीज दैट कलेक्ट द डेटा, कस्टमर डेटा फॉर अ डायग्नोस्टिक, वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे व्हाई कस्टमर डू व्हाट दे डू. व्हाई कस्टमर डू व्हाट दे डू. सिंपल एग्जांपल है. अभी वी आर हैविंग फेस्टिवल, राइट? आप कहीं चले जाओ मॉल में, you will find all festive wears only, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, मतलब क्या, during the basically during certain period customer tend to buy festive wear only because this is a festive period only. अब जैसे ही फिर फेस्टिव खत्म हो जाएगा आपको विंटर वाले कपड़े दिखेंगे क्योंकि विंटर सीजन आ जाएगा. पर ये तो हमने बात करी, दिस इज अ डायग्नोस्टिक वी डिड. ओके, बट हाउ दिस इज रिलेटेड टू द एनालिटिक्स? हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? Ma'am, we could see, I mean, I think we could see that whether for a particular brand, in which season that particular brand is in more demand. For example, a particular brand is giving both the winter, summer, or rainy season. I mean, नहीं basically नहीं, winter and ऐसे 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 इस तरीके से नहीं होगा. okay. Ma'am, I guess we can Ma'am. like for a particular shop or like for a particular company, we can look like at the past 5 years and see like at what time what kind of clothes have देखिए तो ये क्यों आ रहा है? Your battery is हाँ. Who is like giving the answer? Yeah, complete the answer. This is all about right. Yeah, yes, yes, yes. ma'am, you were not audible, ma'am. You were saying something. Yeah, I am saying that complete the answer. You are towards the exact answer. Yeah, yes, ma'am. I'm saying so like the company can go like check for the past 5 years. Okay, so like during this time frame, let's say during the first quarter of the year, these kinds of clothes are sold more. So like and then during the second quarter, third quarter, fourth quarter. So ma'am, like this, they can actually check. Okay, so like during this time of the year, this kind of clothes will actually sell. So let's bring in such clothes more into the to our store, something like that. Right. This is a diagnostic one. Okay. So diagnostic is always done on the basically trends. Okay, customer behavior. So basically, it is mainly used for understanding two parameters. Okay, कि आने वाला time में क्या है and what the customer behavior will be or what will be the customer choices. So वहाँ पे departmental store में you will find the
कॉम्बिनेशन इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ यू. सो अगर हम यही डिपार्टमेंटल स्टोर की ही बात करें, तो अगर आज आप कहीं भी जाते हो इन द डीमार्ट और वेर एवर इन टू द नियर बाय योर डिपार्टमेंटल स्टोर, यू विल फाइंड मोती सोप इज इन फ्रंट ऑफ वेरी फर्स्ट शेल्फ. बेसन लड्डू बनाने के इंग्रेडिएंट्स यू विल फाइंड इट इमीडिएटली. Then you will find all that things which is needed for snacks items to prepare for Diwali. So all these things you will have it on the very first site. वो available ही दिखेंगे आपको. Got it? Am I audible? Yes, ma'am. Is it clear or not clear? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, एक ma'am. अगर मुझे, ये तो एक कस्टमर बिहेवियर को लेके हमने बात करी, ओके. अगर हम इसी चीज को मतलब विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स हम और किसी इस पे बात करें तो लाइक इफ यू जस्ट टेक एनी एग्जांपल, किसी एक जनरल मतलब ई कॉमर्स का लेके एग्जांपल बात करते हैं या कुछ और, लाइक सपोज आई वांट टू इम्प्रूव द कंपनी कल्चर, स्टिल आई कैन यूज द डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स. मतलब एचआर रिलेटेड बात करें तो Yes, ma'am. हाउ वी कैन डू दैट? Ma'am, can We you can please repeat the diagnose the question? past things, what will happen in the companies a few years back, and then we can analyze with it the Can you present. just frame some parameters here? Um, Work culture, or you can say मैम एम्प्लॉय एक्सपीरियंस. नहीं, वही मतलब एम्प्लॉय एक्सपीरियंस मतलब किस चीज का एक्सपीरियंस? दिस इज Ma'am, व्हाट. can you please repeat the question once? Yeah, I just want a diagnostic analytics can also be leveraged to improve internal company culture. So this is a responsibility of human Ma'am, we could resource see here department, the right? past, ma'am, we could see here the records of or behavior of a particular employee, whether any kind of inquiry has been conducted about particular about employees or not, or if that is conducted, how many times the warning period has given, and after that warning, whether after single warning or second warning, that particular employee's behavior. नहीं, And हमको एम्प्लॉय कंपनी कल्चर की बात करना है हमको. We are And maybe okay, maybe we can check like for the past 2 or 3 years, what is the trend of misconduct happening in the office? Like is like the misconduct for towards the employees increasing or decreasing, and how is it affecting their performance? And ma'am, like based on it, we can like make a decision like, okay, like if the misconduct is increasing, then maybe we can call some counselor to the office and have one-on-one sessions with them. And ma'am, like if it's decreasing, then it's no issue, something like that maybe. हाँ, अगर कंपनी में से लोग छोड़ के भी जा रहे हैं तो भी ये कंसर्न रह सकता है. यस Yes, मैम, ma'am. मतलब है ना? एक्चुअली ये हो सकता है कि हम लास्ट जो भी मेरे 4-5 साल के वो रिकॉर्ड्स चेक करेंगे कि अगर हमारे एम्प्लॉयज रिजाइन कर रहे हैं तो मोस्टली उनका रीजन क्या है. अगर सैलरी फैक्टर है तो हम लोग सैलरी में कुछ चेंजेस लाएंगे. तो इस तरीके से भी हम लोग डायग्नोस्टिक एनालिसिस कर सकते हैं. हाँ, मतलब like we will be analyzing the employees यस senses मैम. with the help of psychological factors, okay, कि how यस much they are मैम. feeling safe with their jobs, or how much the management is taking care. So in that taking care में यस सब आ मैम, गया, मतलब उनको मतलब कितना अप्रेजल उनको मिल रहा है, अच्छा, उनको कितना सैलरी हाइक मिल हाँ रहा है उनको every year. अच्छा वर्क Exactly. इन्वायरमेंट मिल रहा है या एग्जैक्टली. नहीं मिल रहा है, नहीं, उनको अप्रेजल मिल रहा है नहीं मिल रहा है. वर्क एनवायरनमेंट एक जेनरिक हमको उससे कंक्लूड करके निकालना है कि हाँ, ये कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है. हाँ. अगर ma'am, हमने हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया पर्टिकुलरली स्किल सेट पे, या हमने हमारे एम्प्लॉयज के लिए कुछ प्रोग्राम्स अरेंज करे, वी and for इन्वॉल्व देम example, इनटू द टीम एक्टिविटीज या सीएसआर एक्टिविटीज जिसको हम्म. बोलते हैं, सोशल मतलब कॉर्पोरेट सोशल यस मैम. रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज में. सो ऐसे सारी
ये सारी चीजें यस हम मैम। इन्वॉल्व करेंगे तो शायद हमारे एम्प्लॉयज रह रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं. सो ऑल दिस थिंग्स वी विल कम अक्रॉस विद द सर्टेन पैरामीटर्स. तो हम क्या क्या पैरामीटर्स ले सकते हैं यहाँ पे? मैम सैलरी। सैलरी, सैलरी एकदम पहला है ना. सैलरी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. चलो अच्छा, सैलरी ऐसा इज क्या द मान लीजिए मेजर वन। आपको ऐसी जॉब मिलती है जहाँ सैलरी बहुत अच्छी, लेकिन हर बार आपको टेंशन, आपके 24 घंटे आपको कंपनी के काम में लगे रहना है, आपका मैनेजर आपके पीछे पड़ा हुआ है, न सोने दे रहा है, न काम करने दे रहा है, न पर्सनल लाइफ मिल रही है, तो आपको वो कंपनी अच्छी लगेगी क्या, भली सैलरी अच्छी मिल रही है? टेल मी. नो no, मैम। ma'am. नो So, मैम। so we मैम can improve by taking the past examples, like हम कैसे उनको entertain कर सकते हैं एम्प्लॉयज को with something, some durations, like Ma'am, हाँ, there वही could तीन be, चार एक्टिविटीज जिसको बोलते हैं ना, yes जिसमें ma'am, yes हाँ, ma'am. मतलब जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये करते हैं, तो वो काफी कुछ उसमें एक्टिविटीज आती है. दे गो ma'am, आउटसाइड एंड दे सम एचआर एक्टिविटीज रहते हैं उसमें, कुछ सोशल बेसिकली कॉज के लिए वो प्लांटेशंस हो गए, काफी कुछ कुछ उसमें इन्वॉल्व मतलब रहते हैं. हर एक कंपनी के अलग अलग उसमें पॉलिसीज आती है, पर सीएसआर इज वन ऑफ द फैक्टर वी विल बी कंसिडर हियर. और क्या क्या हो गया? ma'am, for example, yearly, I mean, definitely company will give the bonus to the good employee, but as well as yearly, company may give the particular, I mean, small gifts. For example, they are giving 10, I mean, 5, 1 or 2, 3% more salary, or say to invest in the physical activity kind of things. For example, they may take I mean, cycling. I mean, for at home they could do cycling, so they get. I mean, company is giving to money to just to invest money in a physical environment. Or for example, company may give a gym facility I mean, Okay, that can be. during So evening or yes, yes. ma'am. So gathering such kind of information, yeah, agree, completely agree. They will also focus on their मतलब employees' physical health as well, right? मतलब जैसे अभी Yes, somebody ma'am. had given me the counselor वाला example. So counselor can be come for their मतलब mental health के लिए, and physical health के लिए they can have their gym, they can have some, वो हर बार कुछ ना कुछ मतलब क्या कह सकते हैं, like मैराथन या ऐसी कोई एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं. कंपनीज आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स. Yes, सो ma'am. दीज आर Yes, ma'am. ऑल द थिंग्स मैम मेनली कंपनीज आर मेकिंग कंपनी कल्चर, मतलब इम्प्रूवमेंट इनटू द कंपनी कल्चर एंड रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज के लिए वो इतने एफर्ट्स लेते हैं. बट अब यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स सब लोगों ने बताए. आई वांट कोरिलेशंस बिटवीन दिस वेरिएबल्स. मैम apart from all these factors, holiday can be a very good factor. वन कैन हॉलीडे. One holiday that each and every employee of the company demands. See, there are many companies, they are giving compulsory holiday basically to their employees for 5 days, sometime. Ma'am, Ma'am, I but think many of the ma'am, that companies that don't company provide is. that. Yeah, Uh, no, no. In India only, they give. It's not only the IT company. There are many manufacturing company also promoting such kind of policy. Like they give 5 days off to their particular segment of the employees, and some companies are giving certain kind of 2 days, basically staycation kind of things also. So many things are happening actually. Sometimes we actually not knowing about it, but such kind of policies are running in the companies to improve the culture. ओके, ये तो जनरल बात हुई. देखो, ये जनरल डिस्कशन हुआ हम लोगों के बीच में, लेकिन अब हम डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं. अब यहाँ पे आके हमको वेरिएबल्स कैसे निकालना है और कैसे वेरिएबल्स को रिलेट करना है. नाउ कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी हाउ वी विल बेसिकली कैलकुलेट दिस? My ma'am, by taking the review of each employees, so that we can analyze the whole data. Uh, Ma'am, for So example, here Infosys company has given to us some kind of data.
Okay. basis on their own diagnostic, whether why the employees are leaving this year more, and which kind of work atmosphere they want. So on the basis of such particular what we have discussed for physical parameter, or giving one more holidays, or some other counseling facilities. So further we could analyze the where are the centers of Infosys company, and where's the whole employees, all employees data we have collected, and individually on each factor we will realize, and further the average we could conduct that where there is a more need of giving which kind of facility, whether physical activity somewhere is good, or the mental general we could say psychological factor, whether this psychological factor is more important. So according to the basis of such we could give where there is a holiday is necessary giving more holidays. Okay. See, basically, what we will do here for gathering the information about employees' thoughts and feelings. See, these are all the feelings and thoughts which we are discussing, right? वो कहीं पे हमको calculate करके नहीं आ रहा है ना कि 10 देना चाहिए, 4 देना चाहिए, 2 देना चाहिए. That is not coming out. हमको कैसे भी करके analytics करना है. तो analytics के लिए तो हमको data चाहिए. Data मतलब facts and figure चाहिए, right? So हम कैसे करेंगे वो steps बता रही हूँ अभी मैं आपको, ठीक है? तो इफ सपोज अगर हम इसको मैं लिख के अगर ये केस देती हूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा मुझे लगता है. अब ये डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का एक यूज केस हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड दिस इज फ्रॉम द हार्वर्ड स्कूल. ओके, दिस इज फ्रॉम द हार्वर्ड स्कूल का यूज केस है ये. इम्प्रूविंग कंपनी कल्चर, ठीक है. डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स can also be used to leverage to improve internal company culture. ओके, अब एचआर डिपार्टमेंट का काम है ये, ठीक है. कैसे काम शुरू होगा, चलो बताओ जल्दी जल्दी, क्विकली. For gathering information about the employees thoughts, ये थॉट्स ही है ना हमारे. Yes ma'am, yes ma'am, thoughts and ideas. Yeah, am I audible na? Thoughts and feelings. Okay, ये थॉट्स एंड फीलिंग्स को हम कैसे कलेक्टिवली हमको डेटा में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे हम? मैम by taking the review of each employees or review meetings. हाँ, तो यहाँ पे हमने कैसे लेंगे, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनसाइड्स द फ्रॉम सर्वे. सबसे पहले सर्वे होगा. ओके, सर्वेज एंड इंटरव्यू. ओके, who is going to do this? The HR department, the HR team will do it. Okay, Yes ma'am. उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स कैसे फिक्स होंगे. अब एम्प्लॉय तो हर कुछ बोलेगा ना. एम्प्लॉय बोलेगा कि मेरे को तो ऐसा चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए. So this is not to be entertained, right? So how it is Ma'am, being finalized? the common problems. हाँ, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो एचआर मैनेजर रहेगा या एचआर मैनेजर जो टीम रहेगा, आई मीन टू से टू डिटरमाइन, सबसे पहला उसका काम रहेगा कि टू डिटरमाइन विच क्वालिटीज एंड स्किल्स मेक समवन, मतलब समवन एन एम्प्लॉय की बात हो रही है, सक्सेसफुल. देखो हर एक को क्या है, द पर्सन हु इज वर्किंग, they want the job satisfaction, they want the success feeling, right? This is more important. Okay, तो वो एक important feeling को हमेशा consider किया जाएगा ऐसे situation में.
एट एनी कंपनी और एट योर कंपनी अगर हम बात करते हैं तो। ओके Yes, ma'am. and now how and when these two qualities, okay, when these two qualities are being identified, मतलब जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज रहते हैं तो उनके लिए उनका हैप्पीनेस एक अलग डिफाइन होता है। ओके उनको क्या कल्चर चाहिए है, उनको दे वांट क्लीननेस, दे वांट प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर what I say air conditioning, their cooling, this all stuff they are expecting because they are into the automobile or manufacturing company जहाँ पे सबसे ज्यादा open space में काम किया जाता है, right? So they are onto the floor, okay? Whereas into the IT company ये सारी चीजें तो उनको बहुत ही कैजुअल लगेगी, वो they will never ask क्योंकि मुझे एसी लगवा दो, मेरे को ऐसी चेयर दिलवा दो, ऐसे कभी कोई नहीं बोलेगा, right? They will not ask this kind of thing. They will definitely go into the some detail other things to make them happy. Are you clear with that? So हर एक कंपनी का अलग अलग ये क्राइटेरिया बनेगा. Is this clear to you? Yes, ma'am. Okay, so there may be the possibility ki like in manufacturing company they may have some recreational activity, they may need some basically personal space for basically cabins or such kind of requirements they may have, or they may have certain kind of pick up and drop service. They may want some improvement into some food quality which they are getting. Many things are involved here. Okay. Yes, Whereas in the IT company, they will not ask for the food quality. They will not ask for the pickup drop. They may not ask for such kind of things. They may ask something different. Okay. So every company is different. मतलब IT और इसकी बात नहीं कर रही हूँ. अगर बैंक की भी बात करें तो बैंक वाले अलग डिमांड करेंगे क्योंकि बैंक is also one of the organization. So such different organization will have their own basically criterias here, and based on those criterias, the diagnostic analytics will be done. And एनालिटिक्स के लिए जो डेटा गैदरिंग होगा वो ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ सर्वे होगा। तो सर्वे में जो पैरामीटर्स डाले जाएंगे वो ऐसे ही डाले जाएंगे जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में लिए, स्पीड, अवेलेबिलिटी, वैल्यू टू मनी, ये सारी चीजें रहेंगी ना वैसे ही। ट्रैफिक में आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, सो आर यू इन द पैरामीटर ऑफ 8 किलोमीटर ऑफ द कंपनी, ये वो सब ऐसे सारी चीजें ऐड होंगी इसमें। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? yes, ma'am. Yes, And then ma'am. we will मैम हाँ, मैम ओवर टाइम भी लाइक एम्प्लॉयज काफी करते हैं तो उसमें भी पे उन्हें करना चाहिए, तो ये भी तो हो सकता है। so they will also मतलब they will also consider that parameters. शिफ्ट अलाउंसेस रहते हैं, so that also बहुत सारे पैरामीटर्स आएंगे इसमें। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में we will have so many parameters, and on the basis of that we will land up with the proper few parameters जिससे हम हमारे एम्प्लॉयज को हैप्पी कर सकते हैं या हम हमारे एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकते हैं। सो द रिटेंशन मतलब जो एम्प्लॉयज का छोड़ के जाने वाला रेट है हम वो कम कर सकते हैं। ये सारी चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू? Yes, ma'am. अभी यहाँ पे भी व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको करना है कोरिलेशन। अब कोरिलेशन कैसे अप्लाई होता है, लेट्स डिस्कस दैट। सभी लोग अपना एक्सेल जस्ट ओपन द एक्सेल। हम यहाँ पे एक एक्सेल का शीट बनाते हैं, दैट वुड बी बेटर। एवरीवन स्टार्ट एक्सेल। आज का क्या डेट है? 19th है ना आज का? 18th? Okay, the very first thing you have to do is you have to take add-ins.
सॉरी, एडेंस नहीं, हम सबसे पहले लेंगे ऑप्शंस। आपको सबको दिखाई दे रहा है ना मेरा स्क्रीन? Yes, ma'am. Ma'am, please let us share this sheet. दिस एक्सेल शीट। Yes, ma'am. Let us. अब हाँ, मैं अभी एक्सेल शीट पे ज्यादा काम नहीं करने वाली हूँ। आज सिर्फ मैं बताने वाली हूँ कि हमको क्या क्या मतलब यूज करना है, और हम एक्सेल पे काम में भी नेक्स्ट इसमें ही करेंगे, क्योंकि मुझे वो चारों एनालिटिक्स समझाना है, आज पूरे करना Okay, है। ma'am. Okay, ma'am. Okay, so what we are going to do here, we will be talking about data, right? इसमें हम क्या क्या ऑप्शन लेंगे? Excuse me, ma'am. या Ma'am, is it the 2022 version, the Microsoft Excel? I think it is right. No, it's not 2022. Yeah, it's 2022. Okay, ma'am. आपके इसमें नहीं है क्या? Ma'am, I was having the 2022 version, but actually I reinstalled the Windows because of the I lost my older version of Windows. हम्म। Now I have got the 2019 version, but there is not that add-ins option there. नहीं, एडिंस में नहीं जाना है, फाइल में जाओ, आप ऑप्शन में जाओ। Yes, ma'am. Go on there. ओके, मतलब सेम ही आ रहा है वैसे। क्या नहीं आना है? मैम सेम ही है, अगर ऐड बस ऐड इन वाला ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। हाँ, अकाउंट यहाँ पे ये एक्टिवेट करो। ओके, उसके बाद CSW फाइल अगर आपके पास, आप कहीं से डेटा सेट डाउनलोड करते हो तो वो एक्टिवेट करो। डेटा मॉडल एक्टिवेट करो। डिसेबल अनडू फॉर द लास्ट पिवट टेबल रिफ्रेश एंड रिड्यूस द रिफ्रेशिंग टाइम। अच्छा, ये तो रहने दो, ठीक है। उसके बाद डेटा कन्वर्जन विजार्ड एक्टिवेट करो। अगर आपको चाहिए कि आप सीक्वल सर्वर से यहाँ से कुछ कनेक्ट करने वाले हो, तो आपको जो चाहिए आप वो भी एक्टिवेट करवा सकते हो। ओके, देन फिर से जाओ यहाँ पे, डेटा एक्सेसिबिलिटी, वेब ऑप्शन। ओके, यहाँ पे वेब ऑप्शन नहीं चाहिए। टूल पैक, एनालिसिस टूल पैक, आपको जो जो चाहिए। एनालिसिस टूल पैक VBA चाहिए, एनालिसिस टूल पैक नॉर्मल वाला चाहिए, आप पहले नॉर्मल वाला ले लो, है ना। उसके बाद बाकी का जो चाहिए रहेगा वो हम एक एक करके ले सकते हैं। ओके, इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके, देन ये तो हो गया सब अभी यहाँ पे। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो, लाइक एनी एनी एग्जांपल, आई एम जस्ट शोइंग यू वन एग्जांपल हियर। एक फाइल ओपन है मेरा, ये डेटा कलेक्टेड है, जस्ट एक ऐसे सिंपल डेटा लिया हुआ है। ओके, जिसमें मीडियन और मीडियन बाय डेट, और मीडियन डेट, मीडियन और अमाउंट, क्योंकि ये दो वैल्यूज है ना, मतलब एक है डेट और एक है अमाउंट। ये दोनों वैल्यूज पे हम मीडियन निकाल सकते हैं।
अब ये निकाला कैसे होगा? सो देयर वेरी सिंपल फॉर्मूला, यू जस्ट गो टू द डेटा, go to the analytics, and here there are the options, so many options are there. आपको पता है कि ये कैसे यूज करते हैं सब? Look at this correlation. देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ. That's the mean median mode, right, ma'am? Yeah, I'm just showing you something different actually now. यहाँ पे एनालिसिस करके कोरिलेशन अगर जब निकालना है, so we will be taking the range. So this is my range, okay, and labels तो दिए नहीं है मैंने, और यहाँ पे out range is this. ओके, एंड हमको यही आउट रेंज, और न्यू वर्कशीट में नहीं चाहिए हमको, है ना? नया शीट नहीं जनरेट होना चाहिए, यहीं पर ही होना चाहिए. ओके, ऑलराइट, द डेटा, वन सेकेंड, कंट्रोल सेट. यहाँ पे जो भी वैल्यू था, अभी एक रैंडम में जो भी वैल्यू था, ये वन जो आया है ना, सिंपल वन. ओके, यहाँ पे कॉलम वन और कॉलम जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं बताती हूँ कि क्या ले यूनिट सोल्ड, ओके, और यूनिट सोल्ड और प्राइस अगर ये है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये रिप्रेजेंट होता, क्या होता है यहाँ पे? प्राइस आता, और यहाँ पे आता यूनिट सोल्ड. ओके, और यहाँ पे ये जो वन आया हुआ है, दैट इज योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट. दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ओके, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है उसकी एक रेंज होती है. देयर इज वन नेगेटिव रेंज एंड द पॉजिटिव रेंज एंड द वन. वन मतलब स्ट्रांगली कोरिलेटेड है. ओके, मतलब ऐसा है कि अगर आप जुलाई मंथ में, अगर आप एक एक एग्जाम्पल अगर हम ले, तो जुलाई मंथ में सबसे ज्यादा अम्ब्रेलाज और रेनकोट सेल हुए हैं. ओके, सो दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन एंड वेरी कोरिलेटेड अगर वो वन आता है तो. इज इट क्लियर? आर यू Yes, अंडरस्टैंडिंग ma'am. Yes, ma'am. कोरिलेशन? ओके, अब यहाँ पे ये जो कोरिलेशन लगाया है वो एक रैंडम, मैंने आपको बताया कि कोरिलेशन लगाते कैसे हैं. अब यहाँ पे हमको ना डेटा क्रिएट करना है. ये जो हमारा केस स्टडी हमने डिस्कस किया ना, कल्चर वाला, इसमें आपको डेटा कलेक्ट करना है. आपको ऐसे काफी अलग अलग डेटा लेने हैं. ऑल द पैरामीटर्स यू हैव टू टेक. ओके, सो जैसे पैरामीटर्स के लिए आप सबसे पहले इंसेंटिव की बात करोगे, देन फिर टाइमिंग की बात करोगे, फिर मे बी ओवर टाइम, मतलब ओवर टाइम की बात करोगे, ओवर टाइम का मतलब इंसेंटिव बात करोगे. ओके, अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस होता है. उसके बाद यू मे सी द स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या यूज होता है. ओके, फिर एनवायरमेंट मतलब क्लीननेस के लिए बोलोगे, क्लीननेस भी एक पैरामीटर ले सकते हो आप. उसके बाद पार्किंग का एक पैरामीटर ले सकते हो. बहुत सारे पैरामीटर्स आएंगे, मतलब यू विल बी टेकिंग सो मेनी पैरामीटर्स टू कलेक्ट द सर्वे हियर फ्रॉम द एम्प्लॉयज. ओके, और फिर यहाँ पे एम्प्लॉयज ने डाला जो भी वैल्यू डाला इंसेंटिव के लिए, ठीक है, मतलब जो भी है, मतलब कुछ आप एक रैंडम वैल्यू ले लो. तो उसके लिए आप ऐसे भी ले सकते हो कि ABCD ऐसे डालेंगे, और A इज नथिंग, इट्स योर 100%, B इज नथिंग, इट्स योर 90 to 100%. आप ऐसे भी ले सकते हो, या 1 to 10 के रेंज जो स्केल जैसे लास्ट टाइम हमने किया था वैसे भी ले सकते हो. सो बेस्ड ऑन योर सर्वे विच यू डिजाइन, उसके ऊपर से आप ये डेटा यहाँ पे कलेक्ट करोगे. आर यू क्लियर मैम, विद दैट? मैम, the correlation coefficient lies between, no, it's actually 0 and 1. यहाँ पे तो वन आया हुआ है, ये जो हमने कैलकुलेट किया उसके ऊपर वन आया हुआ है.
No, ma'am. Actually, the range of the correlation -1 to 1. coefficient. -1 to 1. Okay, ma'am. -1 मतलब नॉट रिकमेंडेड, कोरिलेटेड नहीं है। मतलब एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कि आपके फर्नीचर, मतलब कंपनी के फर्नीचर को लेके और कंपनी के एम्प्लॉयज छोड़ के जाने में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। इफ यू जस्ट, एक सिंपल एग्जांपल, अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ पार्किंग और हमारा एम्प्लॉय जा रहा है छोड़ के, ओके, सो इसको अगर हमने रिलेट किया, मतलब एम्प्लॉय ले ऑफ नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय resignations, only resigning, okay, so this resignation, resigns, is not at all, मतलब ये, 1 second ना, just give me 1 minute. Yeah. So I'm telling कि अगर यहाँ पे हमने देखा कि पार्किंग नहीं है इसलिए कुछ लोग मुझे सी दे रहे हैं, या सी इन द सेंस थोड़ा से कुछ वैल्यू होगी, सी मतलब कुछ वैल्यू होगी, मान लो वहां पे पार्किंग के लिए 7, 4, 9, और यहाँ पे रिजाइन कर रहे हैं लोग, ओके, ये वैल्यू है कुछ भी, मतलब ये भी एक वैल्यू होगी, एक महीने में 4 लोग रिजाइन कर रहे हैं, दूसरे महीने में 9 लोग रिजाइन कर रहे हैं, तीसरे महीने में 12, चौथे महीने में 21 रिजाइन, 11 रिजाइन, 19 रिजाइन और 43 रिजाइन। अब ये जो पैरामीटर्स अगर हमने लिए इन माय कोरिलेशन, ओके, फॉर डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, तो इसका मुझे कोई भी यूज नहीं होना है। कंपनी में पार्किंग मिलने नहीं मिलने से कोई रिजाइन नहीं करता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, ma'am. So the parameters which you are taking, it has to be a very relevant with your situation. अगर हम कल्चर की बात कर रहे हैं जहाँ पे कंपनी को एम्प्लॉय रिटेंशन चाहिए है, या एम्प्लॉय को दे वांट दैट देयर एम्प्लॉय शुड बी हैप्पी एंड दे शुड एंजॉय द डूइंग वर्क, तो उस केस में आपको आपके जो पैरामीटर्स आप सर्वे में ले रहे हो, दैट शुड बी वेरी क्लियरली mentioned, I mean to say clear, एंड विच रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन, मतलब जो केस स्टडी उसके रिलेटेड होना चाहिए, सो दैट उससे जो कोरिलेशन जो है वो हमको एग्जैक्ट मिलेगा। ओके, क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, ma'am. अभी एक ये केस स्टडी हुआ डायग्नोस्टिक का, आपको इसके अलावा भी केस स्टडी सोचना है डायग्नोस्टिक के बारे में। ओके, हम ये Okay, जो ma'am. एक्सेल में जो मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ आपको जस्ट ग्लिम्स दे रही हूँ, इट्स नॉट अ सेशन ऑन द एक्सेल, ओके, वी आर गोइंग टू गेट इनटू डिटेल अबाउट इट, सो डोंट गेट कंफ्यूज योरसेल्फ कि यार इतना ही बताया ऐसे कैसे बता दिया, ऐसा नहीं है। हम आज ये पूरा करने वाले हैं, दिस इज माय टारगेट टू कंप्लीट दिस, ओके, एंड वंस इट इज बीइंग डन देन हम इमीडिएटली फिर हमारा डेटा सेट क्रिएट करेंगे और फटाफट फिर उस पे ऊपर स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करेंगे, और वो कहाँ करेंगे, हमारे एक्सेल में करने वाले हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से डेटा एनालिटिक्स का प्लगइन्स लेना है, तो वो आपने ले ही लिया है ऑलरेडी, राइट? नाउ नेक्स्ट एनालिटिक्स इज प्रिडिक्टिव वन। So what do you mean by predictive analytics? Predictive analytics is use of data to predict future trends and events. It uses the historical data to forecast potential scenario that can help the drive the strategic decisions. Okay, the predictions could be for near future, for instance, predicting the malfunctioning of a piece of machinery. Okay,
or it may be the distant future, such as predicting your company's cash flow for upcoming year, or maybe your company's balance sheet or company's status in the next 5 years. So this kind of basically analytics is called as a predictive one. अब इसके लिए केस स्टडी बताओ फटाफट, क्या सिचुएशन ले सकते हैं? आप ही लोग बताओ मुझे प्रिडिक्टिव के लिए. क्या बात है, आज कंटिन्यूअस 2 घंटे हो गए, इसलिए आज एकदम से एनर्जी जीरो. इसलिए आज मैंने केस स्टडी लेने का ही डिसाइड किया था कि No, सो no, दैट एटलीस्ट हमारा Ma'am, इंटरेक्शन बना the रहेगा. no, I'm actually we are doing analysis here. The same things. I mean, same question is coming again and again. So I was thinking whether that would be a descriptive, or that would be predictive and analytic. The same thing ma'am, that in the a customer particular. segmentation. हाँ, कस्टमर सेगमेंटेशन इज अ प्रिडिक्टिव वन. Ma'am, we can use the analysis to like divide the customers into groups performing the specific tasks. और कुछ? Ma'am, is forecasting a predictive method? Forecasting and clustering. हाँ हाँ, यू आर लिटिल बिट टू द बेसिकली पॉइंट. आप उसका कोई फ्रेम करोगे एग्जाम्पल? So, ma'am, like basically, like I'm talking from a data visualization point of view. So, like आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं. I use Tableau, so there is an option of forecasting. So, like, excuse me, ma'am, am I audible now? Yes, you are. Yes, ma'am. So, saying. No, you are not audible. For example, we could give the example here about a mobile company. For example, touch screen things. I mean, we could. On it. Yes. Then we can see the trend, like the software or like itself, like forecast whether the line graph will go up or go down. So, ma'am, like maybe this is a kind of a predictive model. Like forecasting can be predictive in such ways. हाँ, forecasting एक मतलब this is one of the basically solution of your predictive analytics. लेकिन predictive analytics का एखादा सा real world example I'm expecting. Ma'am, for example, like during the COVID-19, the death rates. Ma'am, like there was a time where people used to say that during the summer, the virus will become less effective. So therefore, the death rates will become low. So, ma'am, like, is this some kind of predictive method? Like, is this some kind of prediction? No, not exactly. Ma'am, for example, we could give the mobile company's example. I mean, Cell. If particular feature is given in Microsoft, and that on iPhone, so Samsung is going to opt some different kind of feature. For example, if people if it is in demand that there could be more defined camera quality should be given in the particular mobile phone. So when this trend, or we could also see we could also in mobile phone we could also enhance some future features. Example that like Microsoft is already given, but some other features kind of like a mini computer could be done here. So I mean, if comparatively, what could be the next future trend or event could be done in these companies, so or mobile phones. So there could be example of this. Robotics can be a very good example in this. AI and robotics, yes, AI.
like The adding features of AI should be given in mobile phone. ये now जो the है ये डायग्नोस्टिक पे जा रहा है, इट्स नॉट कमिंग इनटू द प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव में हमारा फ्यूचर पे डिपेंड होता है। प्रिडिक्टिव इज कंप्लीटली फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट्स। ओके, आने वाले कल के ऊपर बात हो रही है। but in robotics the now now the robots have been made, like you have listened about the Sophia the robot. हाँ, ये सब आप Now जो बोल रहे हो ना, वो आप आपके मोबाइल में ऐड करेंगे या आपके एप्लीकेशन में डालोगे तो आपका सेल बढ़ेगा। यू मीन टू से दिस? no ma'am, like now the technology is being made like adding human feelings to the robot, like that predictive analysis, like predictions are being made how to do that. नो नो, Ma'am, नॉट like you take if the like we take a university example. If university have some facilities, like some of the branches he have to add, so he can say or university can predict the future, which is futuristic branch they can add to their universities by realizing the present situation. Maybe this can be the predictive. Not exactly. Ma'am, I'll just do is one some use cases. Okay, I just give the use cases. आपको उसके ऊपर case study either you have to find out or either you have to imagine and create it. Okay, मैं एक example दे रही हूँ आपको, sales and business development. ma'am, in the definition of predictive ma'am, am I audible? Yeah, you are audible. Ma'am, in the definition it is written that it uses the historical data. No, it use the data to predict. Okay, ये हमारे uses historical data पर predict क्या कर रहा है, वो future कर रहा है। Ma'am, so we can take the example of the our universities, like for the admission cell. Let's take हाँ the example of admission हाँ cell. हाँ। So, with the help of the previous data they have, हम्म। they can predict the upcoming admissions. हाँ, जोन मतलब ये हो This is सकता है predictive दिस या। analysis. तो यूनिवर्सिटी में जो आपका एडमिशन सेल है, मतलब इन जनरल देखो, एडमिशन सेल मतलब क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट ही है ना वो। Oh, yes, ma'am. बिजनेस बढ़ा रहा है, Yes, राइट? ma'am. तो ये जेनरिक मैंने लिखा है ना यहाँ पे, आपने स्पेसिफिक Okay, okay, बनाया ma'am. उसको। देखो, आपने Okay, ma'am. यूनिवर्सिटी के Okay. लिए, आपने एजुकेशन के लिए फोकस किया, राइट? सो दैट इज ऑल ओके। मैं यही चाह रही हूँ, आई अग्री, कंप्लीटली अग्री। आपका एग्जाम्पल सही है कि एडमिशन सेल, अगर मान लो एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि जैसे पूना में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है। ओके, यू माइट बी नोइंग अबाउट इट। तो अगर वो उसने एनालिसिस किया है कि भाई मेरे को सबसे ज्यादा अगर एडमिशन मेरे नॉर्थ से आ रहे हैं, तो मैं वहां पे ही अगर मेरा लोकेशन खोलूं या मैं वहां से कैंपेनिंग करूं या मैं वहां पे जाके बच्चों से कनेक्ट करूं, आई विल गेट मोर इनपुट्स, राइट? आई विल गेट मोर इनपुट्स इन द सेंस ऑफ डेटा एंड basically my admissions get increased, right? There are possibility. So this kind of thing definitely coming under sales and development. Are you clear Yes, with that? yes, ma'am. Okay, अभी और क्या हो सकता है? Ma'am, the healthcare department. हाँ, Then, हेल्थ केयर को लेके कुछ बताओ आप मुझे, व्हाट कैन बी ma'am, द हेल्थ केयर? again we can divide it into like the groups. For example, for different illnesses, how much patients were there, and हाँ, using that patient's record for the future predictions. ओके ओके। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, और हेल्थ केयर में अगर हम लेते हैं अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी डिसीज, पॉसिबल नहीं है? Yes, ma'am, it is possible. हाँ, अब इसके लिए आपको क्या करना है?
1 second. You had to take help from Google, Chat, GPT, whatever you feel. Diseases. Okay. So early detection of diseases is healthcare. Okay. अभी और एक हम ले सकते हैं, सेल्स और डेवलपमेंट ले लिया. We will also consider entertainment and hospitality. इसमें भी हम ये ट्रेंड्स निकाल सकते हैं. How you are going to find out those trends? So these are the 3 areas I had given here for your predictive analysis. Okay, for the predictive one. Will you any of you anything you selected and work on it? आप करोगे ये? Yes, Yes, ma'am. Okay, try to do it. Okay, ये आप करोगे तो आपको क्लियरिटी आएगी एनालिसिस के बाद, मतलब इस पर्टिकुलर प्रेडिक्टिव एनालिसिस को लेके. ओके. Okay, ma'am. ठीक है. Now the next thing we are having is prescriptive analytics. Prescriptive analytics is the process of using data to determine an optimal course of action by considering all relevant factors. This type of analysis yields recommendations for the next steps. Because of this, prescriptive analytics is valuable tool for a data-driven decisions. It's a very important thing because prescriptive analytics is a part of your machine learning algorithms. So जो आप AI and all that neural network or human machine interfacing, all these things which you are talking about, that's a part of your prescriptive analytics. Okay. Yes, ma'am. Okay. अब यहाँ पे I'm not discussing any kind of field as if machine learning itself is one of the domain for the prescriptive analytics. तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के आना है, क्योंकि जब मैं इसकी सारी बातें करूंगी फनेल्स को लेके, when this comes, जो जैसे आप चैट बॉक्स की बात कर रहे हैं ना, चैट बोट की, सॉरी, चैट बॉट की बात कर रहे थे, तो व्हाट एग्जैक्टली, जैसे आप उसको जो आप रिस्पॉन्स देते, गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई हेल्प फॉर यू, तो आप बोलोगे टेल मी योर नेम, तो आप आपका नाम बताओगे, तो वो तुरंत बोलेगा हेलो दिस. ओके, जैसे अगर मैंने डाला माय नेम इज आभा, तो वो बोले, मतलब जो रिस्पॉन्स आएगा, हाय आभा, हाउ आई कैन हेल्प यू. फिर मैं बोलूंगी आई एम जस्ट अ कस्टमर, आई बाय दिस एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई वांट दिस, आई वांट अ कॉल बैक. जो भी रहेगा वो उसके मैंने लिखे वाले पे वो रिस्पॉन्स करेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, ma'am. So that is basically a type of analysis which is the recommendation for the next steps. Are you clear with this? ये जो लिखी हुई लाइन है जिसको मैंने हाई अभी मार्क कर रहा है इन द सर्कल. और ये डेटा ड्रिवन होती है, मतलब डेटा ड्रिवन होती है मतलब जो डेटा आप दोगे उसी का ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ भी रिस्पॉन्स दे देगा. ओके, सो इट इज ऑलवेज अ डेटा ड्रिवन अप्रोच. Prescriptive analytics. Okay, so the chatbot, whatever be the AI tools, everything will come with the prescriptive analytics. Under prescriptive analytics, अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने एक AI tool इंस्टॉल किया था अभी recently, just for the avoiding the grammatical mistakes on the writing. So it is continuously popping up. वो कब पॉप हो रहा है? जब मैं उसके रिलेटेड डेटा डाल रही हूँ, जब मैं रिलेटेड स्पेलिंग लिख रही हूँ, देन एंड देन इट इज पॉपिंग अप. ऐसे खुद से नहीं पॉप हो रहा है. इज इट क्लियर? Yes, yes, ma'am. yes, ma'am. So that is basically the one of the application I am telling, prescriptive analytics. पर prescriptive analytics जो है वो एक machine learning का ही part है. Okay, that is not at all purely the commercial one. Okay, but we will discuss about this as well. This is not to be done with the help of Excel. Okay, पहले की ये तीनों analysis हम करेंगे Excel पे. Third one, sorry, fourth one will need
machine learning understanding, and there are some specific tools and interfaces available going with the prescriptive analytics. Okay, so that these three things we will be implementing. अब ये तो हमको समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, यूज केस हमने डिस्कस करे आज. अब हम ये तीनों को एक्सेल में यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस वी विल बी इम्प्लीमेंट. ओके, फिर हम एक डेटा सेट लेंगे और उसके ऊपर हम छोटे छोटे डेटा सेट लेंगे और उसके ऊपर हम ये सारे एनालिटिक्स अप्लाई करेंगे. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. So we will stop here today. It's already 8 o'clock. Okay. I hope today is so much extended session, but yeah, but you understand what exactly this 4 category of analytics and what kind of statistical approaches, or we can say the methods we are going to use. Okay. And those methods we will be implementing into Excel into the next session. Okay. Ma'am, please share all these. Oh yes. I'm examples just and- give me 1 second. I'm just sharing this Word file only with you. Yes, ma'am. Thank you. So that would be better. I'm Yes. just sharing in the chat. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, can you also send the presentation? PPT you want? Yes, ma'am. 1 second. Just give me 1 second. First पहले मुझे ये भेजने दो. पीपीटी में ऐसे बहुत कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो वो भी दे दूंगी मैं. वो जो आपके डैशबोर्ड में रहेगा ना, उसमें से अपलोड करती हूँ पीपीटी, ज्यादा बेटर रहेगा. Okay, ma'am. और ये नोट्स तो कैसे ही है, हम लोगों को पता है ना, लाइक व्हाट इट इज. सो आई हैड जस्ट शेयर्ड विथ यू. आई होप यू रिसीव्ड, एवरीवन हैड रिसीव्ड नोट्स. Yes, ma'am. The chat I had shared, so kindly download it. Okay, because once the session is over, you will not able to download it, so download it immediately. Okay, Yes, ma'am. fine. So we will stop here today. I hope you enjoyed today's session, because I made today's session more interactive and basically into the communication way. I know कि 2 घंटे 2 घंटे के सेशन इज लाइक वेरी डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब. सो हमने काफी यूज केसेस डिस्कस किए, आपके पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड किए, एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आर द पर्सपेक्टिव अबाउट दिस 4 कैटेगरी ऑफ एनालिटिक्स. एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग दोस यूजिंग एक्सेल. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर अब एक्सेल शुरू हो जाएगा. ओके. Okay. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Thank you, Okay, ma'am. Thank you so much, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Bye.